Hello everyone, welcome to the channel Koshur Scientist. This is your host Shahid Farooq and I welcome you all again to this channel. And today we will be starting our next chapter, that is a pair of linear equation in two variables of the class 10th. अभी तक हमने दो चैप्टर्स किए हैं, पहला रियल नंबर्स एंड देन वी मूव ऑन टू पॉलिनोमियल्स. उसमें हमने क्वेश्चंस किए, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो किए, आपको ये बताया कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं. उस पर हमें एक और लेक्चर करना था, लेकिन अभी चूँकि एग्ज़ाम्स अब थोड़े नज़दीक आ रहे हैं तो वी हैव टू जस्ट मूव ऑन and I will try to cover more questions on that in the coming time when your exams will be near, so that you will just revise your topics and do some questions related to that. And today our main focus will be on the linear equation in two variables. तो इसको हम स्टार्ट करेंगे आज. इस पे भी 3-4 लेक्चर आएंगे और पहला लेक्चर जो कि है तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कि इसका नाम ही चैप्टर का है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन. पहले ही आप पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है, या पॉलिनोमियल्स में लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है वो क्या होता था. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उसको हम बोलते थे जस्ट लाइक दैट, हम लिखते थे ax प्लस b. ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इट इज़ 1. तो मैं बोलता था इट इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल को मैं इक्वेशन में कब कन्वर्ट करता हूँ, जब मैं इसमें इक्वलिटी साइन लगा के इस तरफ कोई कांस्टेंट या ज़ीरो लगाता हूँ, तो ये मेरी क्या बन जाती है, इट बिकम्स माई लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री. ऐसी कोई इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूँ तो इट विल बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. दिस विल बी माई लीनियर इक्वेशन इन one variable because the power of this x that is equal to 1 and the coefficient a and b, these are constants. These are the constant values. These are constant values. ये था हमारा linear equation. Now we have to study linear equation in two variables. That means we will not be having only single variable x, we may have two variables and we denote these two variables by x and y respectively. That means our linear equation of two variables, its general form will be equal to ax plus by plus c equal to 0. Since the degree of this polynomial of this linear equation is 1, we say it is linear equation in two variables where variables are x and y respectively, and these a, b and c, these are all constants. These are all constant values, and x comma y, these are my two variables that will be changing along the values. तो ये मेरे दो वेरिएबल्स है एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन आई कॉल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ हमें पता है, आगे अभी हम सॉल्यूशंस का देखने वाले हैं, तो वी नो द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन व्हाट विल बी दैट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव ax प्लस b इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था. सॉल्यूशन वी से इज द वैल्यू ऑफ x. Solution is the value of x that will satisfy this equation. वो value of x जिससे मेरी ये equation क्या, ये true हो जाए. This will, that means the left hand side will be equal to the right hand side. That will be left hand side has to become equal to 0. For that value of x, we say that it is the solution of this linear equation. Now for this linear equation in two variables, we are having two variables. That means we have to find the value of these x and y respectively, so that we can find the solution of this linear equation. But at least I should have two equations to find the two unknowns, because I will be having two unknowns x and y there. So if I have to find the solution for this equation, I need to have at least a pair of linear equation. A pair of linear इक्वेशन व्हेन, जब मेरे पास ये टू वेरिएबल्स में हो, तब जाके मेरे पास एक पेयर होना चाहिए, तभी मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पा सकता हूँ. चाहे फिर वो मेरा ग्राफिकल मेथड से हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो, या आगे जाके हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे वो उससे हो, तब जाके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो दिस वाज हाउ वी कैन डिफाइन लीनियर इक्वेशन and what will be the
how we can find the solution of this linear equation. ये फिर से मैंने मतलब we have just written it. Let ax plus b is a linear equation. Then solution of the equation is the value of x. वो क्या होता है solution? We say it is the value of this x that will satisfy this equation or that makes this equation be true. That means we have to make the LHS equal to RHS, and that value of x will be my, that I say is the solution of the equation. वो मेरा equation क्या क्या solution होता है. इसी तरह अगर जो मैंने बोला अभी, अगर 2 वेरिएबल्स में हो तो तब जाके मेरे पास at least I should have 2. If I write this as a1x, b1x and c1 equal to 0, then I should have another equation like this, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then I can find the values of x and y respectively. That will satisfy both these equations. That is how we found the solution of a equation. First of all, in this chapter we will be taking the graphical representation or graphical method of, we will be taking graphical method of solution. Graphically how we can find the solution of the pair of linear equations. Now ये linear equations जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें real life examples में use हो सकता है. For example, अगर मैं आपको बोलूँ there is a person, for example his name is Rahul. राहुल कोई बंदा है जो कि किसी he goes to a fair, मेला, वो मेले में जाता है and he wants to, he sees at shop, उस पे जाके वो कुछ मिठाइयाँ खरीदना चाहता है और उसका कुछ कॉस्ट है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द कॉस्ट ऑफ ₹3 per toffee or per sweet, and at the same time he sees there is some game going on that will cost him 4 for each try. For each trial he has to pay ₹4. Now if he has ₹30 total, if he has total ₹30, then we have to find, this is one situation, and second situation is given that the number of toffees or the sweets he can buy is half the number or 1/3 or 1/3 the number of the trials he can play of the game, 1/3 of the trials of game. अब मुझे ऐसी कोई कंडीशन दी हुई है और मुझे बताना है कि वो कितनी बार ये खेल खेल सकता है और वो कितनी मिठाई ले सकता है. तो दीज आर माई 2 कंडीशंस, दीज आर रियल लाइफ कंडीशंस जिसमें मेरा क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स यूज हो सकता है. देखिए ये अगर मैं इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म दे दूं तो मैं अगर बोलूं कि मैं बोलूँगा लेट नंबर ऑफ स्वीट्स बी इक्वल टू x and let the number of trials he can play is y. So the first condition that is given to me, that is the number of sweets he can buy is 1/3 or 1 I can say 1/2 the number of trials of the game. That means this x is equal to 1/2 times y. This is my first equation. Similarly, the second equation says if cost of each toffee or each sweet is ₹3, that means 3 into x plus वो कितनी बार उस ये खेल खेल सकता है, that is 4, और कितनी बार खेल सकता है, that is y. And this sum should equal to, because he has ₹30 only, so this sum has to be equal to 30. This is the total amount he can spend, and this number is given to me. So I have got the 2 equations now. X is equal to y/2, and similarly 3x plus 4y is equal to 30. That is called the pair of linear equation. Since both these are linear, because the power of both x and y, the variables is 1 in the both equations, so this is pair of linear equations. These type of questions we will be seeing in this chapter, और इसी तरीके के बहुत सारे questions हमें इस chapter में मिलेंगे, और यही सारे questions हम solve करेंगे, इनका solution देखेंगे. What will be this value of x, y that will satisfy both these equations. इन्हीं को हम फिर बोलेंगे that the value of this x and y, this will be the solution. This will be the solution of linear equation in 2 variables. Linear equation in 2 variables.
This was the intuition why we are studying these linear equation. एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाए कि हम ये लीनियर इक्वेशन पढ़ क्यों रहे। अब हमने देखा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फॉर मुझे पता है अगर लीनियर इक्वेशन मेरी है x प्लस बी इक्वल टू 0 तो मेरा x का वैल्यू माइनस बी बाई ए निकल सकता है। सिमिलरली अब मुझे ये इनका सॉल्यूशन निकालना है। फॉर दैट आई हैव टू सॉल्व दीज बोथ इक्वेशंस टू फाउंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ इसके लिए मेरे पास बहुत सारे मेथड्स है एंड द फर्स्ट मेथड वी हैव टू स्टडी इज द ग्राफिकल मेथड, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। एंड सेकंड we will be taking the algebraic methods जिसमें हमें पहला जो है that is substitution. Using substitution we will be solving these, and second is using elimination. We will be eliminating one variable among the two and we will be solving that equation, and then we will find the value of first in terms of the another. These are the ways by which we can get the solution of the linear equation in two variables. So in this lecture we will be taking the graphical method, and then in coming lectures we will be taking the substitution and the elimination methods as well. So moving on to what is the graphical method, or how can we graphically find the solution of the linear pair of equations in two variables. So first of all, when for a pair of linear equations which has no solution, अगर मेरे पास जो पेयर है, जो भी मेरे पास a pair of linear equation, if it has no solution, अगर मुझे कोई भी solution इन equations का नहीं मिल रहा है, अगर मेरे पास इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, then I say that it is the inconsistent pair of linear equation. What? It is called the inconsistent pair of linear equation. Similarly, if the linear equation pair has a solution, whether it is infinite or it is unique, that doesn't matter. लेकिन हमारे पास अगर solution है, if we can get the solution whether graphically or using substitution or any other method, we say that this pair of linear equation is consistent pair of linear equation. These are the two terms that you will be maybe asked in your boards for one mark question that are given in MCQ types, that what are inconsistent and consistent pair of linear equations. Now we need to find what will be the, or how can we find the solution of these linear equations, whether it will be inconsistent or consistent. Now we know that linear equation, what is its form? It is equal to ax plus b equal to 0, and we know already that the graph of this is a straight line. This is a straight line because it is of the form y equal to mx plus c, and this is the equation of a straight line. So the graph of this linear equation will be a straight line. ठीक, इसी तरह अब हमारे पास क्या है? We have a pair of linear equations. We have a pair of linear equations. That means when I plot the graphs, that will not be only a single line, it will be a pair of lines. For example, if I have one equation is a1x plus b1y plus c equal to 0, and second is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is my pair of linear equations. If I plot this, it will be one straight line, and if I plot this equation, it will be another straight line. Now there can be, I can say there are three possible scenarios in which these lines will be plotted in a graph. For example, first will be when this is my xy coordinate, I can plot graph of first line is like this, and another one will be like this. That means it will coincide at one point, just one point. इस वाले पॉइंट पे मेरी ये दो जो है ये इक्वेशंस के ग्राफ, दे जस्ट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दिस. सपोज दिस इज पॉइंट ए, इस पे ये इंटरसेक्ट करते हैं. अनदर पॉसिबल सिनेरियो इज दैट आई हैव द, this is my one line of first equation, and another जो मेरा ग्राफ है दूसरी का, वो जस्ट इसके कोइंसाइड कर रहा है. दैट मीन्स वो इसी पे ओवरलैप कर रहा है. दे आर बोथ ओवरलैप्ड. This is another scenario. And the third scenario is
my first line is like this and another is parallel to this, that means they will never meet. These are the three scenarios where we have to where we can find the solution, and these three give us the different solutions of a pair of linear equations. When the graphs of the two equations, when they intersect at a single point, this single point, that means it is x and y coordinate, that will be the solution of, that will be the value of x and y, which will be solution of this pair of linear equation, and this solution will be unique, this solution will be unique, that means this pair of linear equation will be consistent. तो ये है क्यों, क्योंकि ये जो solution है, solution exists and this solution is unique, that means it is unique and consistent. now अगर ये overlap कर रहे हैं, मतलब दोनों lines same एक दूसरे के ऊपर है, they are overlapping, that means कि ये हर एक point पे overlap कर रहे हैं, that means it will be having infinite solutions, infinite number of solutions, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे आई कैन कंसिडर इट टू बी कोइंसाइडिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ये हर एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे या इंटरसेक्ट कर रहे, सो आई कैन से दैट इट हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सो इट इज कंसिस्टेंट तो ये है, it is consistent but it is having infinite number of solutions. so अब मेरे पास इन this linear pair के लिए एक solution नहीं है, बल्कि मेरे पास इनके infinite number of solutions है. and third is कि अब मेरे पास ये जो है these are parallel lines, that means they won't be intersecting at any point. तो जब ये intersect नहीं करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि there is no solution. There is no solution for this pair of linear equation, and when there is no solution we say that it is the inconsistent pair of linear equations. What? It is inconsistent pair of linear equations. These were the three scenarios based on the graphical representation or graphical method of the solution of the linear equation. अब मैं हर बार इनका ग्राफ प्लॉट करूं इससे पहले, मतलब अगर मैं इनके these if I compare the coefficients of these two equations, I can still found whether this pair of linear equations will be unique and consistent, whether it has infinite number of solutions or whether it has no solutions at all. For that we will be just considering these three equations, these three pairs of linear equations, and we will उससे हम ये जो है ratios पे based एक formula sort of निकालेंगे जिससे हम बोल सकते हैं कि whether these pair of linear equations will be having unique solution, infinite solution or no solution at all. For example, अब मेरे पास जो पहला pair of linear equations है, that is x minus twice y equal to 0 and another is 3x plus 4y minus 20 equal to 0. If I take the ratio, just look at the general formula, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and another will be a2x plus b2y plus c2 equal to 0. These are my general formulas or general representation of the linear equations in two variables. So considering this, we have x and this, that means it is coefficient a1 by a2. If I take this ratio, a1 is equal to 1 and similarly a2 is equal to 3. Now if I take b1 by b2, what will be that equal to? We have b1 is equal to minus 2 and b2 is equal to 4. That I can further simplify, that will be minus 1 by 2. And similarly, if I consider c1 divided by c2, what will be that equal to? That is, here I have c1 is equal to 0 and c2 is equal to minus 20. If you look at these three ratios, we have a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Leave c1 by c2 aside. This is the first intuition or the result that we can make out of it. This is the first result. And when this type of result comes out, we say that this pair of linear equations, if I plot this the graph, they will intersect at only just one point. What? They will intersect at only one point. If I plot the graph of these two linear equations, x minus 2y equal to 0 and 3x plus 4y minus
20. The graph will be like this, that means it will be intersecting at a single point only. And we can say from this ratio, if the ratio comes out to be a1 by a2 is not equal to b1 by b2, we say that the this pair of linear equations will be having unique solution. What? It will be having unique solution. This is the first. Coming to second, let us copy the equations, that is 2x plus 3y minus 9, 2x plus 3y minus 9 equal to 0, and another is 4x plus 6y minus 18. 4x plus 6y minus 18 equal to 0. Now taking the ratios here, a1 by a2 will be equal to 2 by 4, that is 1 by 2. Similarly b1 by b2, that will be equal to 3 by 6, that is again 1 by 2. Similarly c1 by c2, that will be equal to minus 9 by minus 18, that is minus minus will cancel and it will be again 1 by 2. If this sort of pattern comes out, that means a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. When this type of form comes out, we say that this pair of linear equations will be having infinite number of solutions. That means it will be consistent, but the solutions will be infinite. Coming to the third type of equations, that is x plus 2y minus 4, x plus 2y minus 4 equal to 0, and another is 2x plus 4y minus 12, 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Taking the ratios a1 by a2, what is that equal to? That is 1 by 2. Similarly b1 by b2, that is equal to 2 by 4, that is again 1 by 2. And third is c1 by c2, it is equal to minus 4 divided by minus 12. Minus minus cancel out, it comes out to be 1 by 3. And this type of pattern, that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. When this type of pattern or the ratios come out, we say that this type of equations will be having no solution at all. They will be inconsistent pair of linear equation. Inconsistent pair of linear equations. These are the three results that we have to just remember. That is, first one is a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then it will be having unique solution. Second is, if it is equal to a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the solutions will be infinite. And third is, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, then the solutions will be no solution. That means there will be no solution, or the graphical representation will be parallel to each other. These are the three types of equations, or three possible outcomes that we can get from the graphical method. सो ये तीन तरीके के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से. नाउ आने वाला जो लेक्चर होगा अगले हफ्ते का, उसमें हम इसी ग्राफिकल मेथड्स पे बेस्ड, अब हमें इतना तो मतलब अब जब हम कोई भी एक पेयर ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, वी कैन सी द कोफिशिएंट्स, अगर हम उनका रेशो निकालें तो उससे हम ये बता सकते हैं कि वेदर इट विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा. उतना हम इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं. लेकिन द सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन वो क्या होगा, उसके लिए हमें एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करने होंगे यूजिंग द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. तो उसमें हम इक्वेशंस प्लॉट करेंगे इन ग्राफ पेपर. तो उसके बाद जो सॉल्यूशन वायर इट विल बी कोइंसाइडिंग, दैट विल बी आवर सॉल्यूशन. तो वैसे क्वेश्चंस आगे आने वाले लेक्चर में इस पे ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो चाहे बोर्ड्स वगैरह है उनमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं इस चैप्टर से, वो भी आपको बताएंगे. तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करिए. इतना आसान ही है क्योंकि आपने पहले से लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो जीरो निकालना उसका हम वो जानते हैं कि व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. तो सेम जब हम इक्वेशन के लिए निकालते हैं, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इसी तरह हमने टू वेरिएबल्स में देखा, तो उसके लिए हमारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशंस होनी चाहिए थी. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस.
तो उसके बाद हमें पेयर का सॉल्यूशन निकालना है। उस पे हमारे पास दो मेथड्स है, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज द अलजेब्रिक। एंड अलजेब्रिक में भी हमारे पास दो टाइप्स के सॉल्यूशंस आते हैं। फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, एंड थर्ड आता है हमारे पास यूजिंग मैट्रिसेस, जो आप अपने 11th और 12th क्लासेस में पढ़ेंगे। वो अभी हम 10th में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आने वाले लेक्चर्स में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पे डिस्कशन होगा और क्वेश्चंस भी करेंगे। आई होप कि आपका को आज का ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स थे वो सब समझ भी आ गए होंगे। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज, दीज रेशोज, and by these you can see whether the solution will be unique, it will be infinite, or whether there will be no solution at all. तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तब तक के लिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं पे भी कोई गलती लगे या इफ़ यू वांट के कुछ और कंटेंट होना चाहिए, सजेशंस वगैरह, तो वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।